Okay, G. So in this one letter costs 84 cents. So 1950 letter will cost how much? It's going to cost X. If I cross multiply this, mera bacha, will I get my answer? But my answer will be in cents. So I need to divide by 100 in order to get in dollars. Now, in the next question, they are talking about percentage increase. What's the formula of percentage change? It's new minus old upon old into 100. The new value of letter posting is 96 and the old value was 84. That's how I'm going to get the answer. In the next part of the question, it says if the company posts more than 1,000 letters, they get 15% discount. तो 1200 into 0.96 is what बच्चे आपका 11.52, and if you give them 15% discount, so it's going to be आपका, yeah, so discount is this much. Now company B is also paying the same cost, and cost of each letter posting is what? 0.96. So it's going to be 0.96 multiplied by X letter is equal to how much they are paying? 979.2. And that's how I'll find out the numbers of letters they posted. Now, one thing I would like to add here we got this value 1152, right, bache? And that was 100%. If 979.2 you give divided by 15% 0.96, discount, that's the what? remaining person. 1020. Acha, one more thing you could have done here was you could have done this by cross multiplication also. So 100% value is what? 1152. And if you give 15% discount, the remaining will be 85% left. That's going to be X. If I cross multiply this, I would have gotten 979.2. Got this? Okay guys, 2022 में cost 1 kg और लेस की 4.60 थी, और हर kg के साथ हर एडिशनल 0.5 kg के साथ 1.1 बढ़ जाता था. तब 3.5 kg की मुझे कॉस्ट चाहिए. तो 1 kg की कॉस्ट 4.60 है, एंड 3.5 में कितने एडिशनल 0.5 kg? 5, और हर उसकी क्या है? 1.1.
तो 5 into 1.1 makes what बच्चे 10.1. Then the cost of posting parcel increases by 7.2%. After the increase, the cost of posting a parcel is 13.40. Then calculate the original price. एक मेथड तो ये है कि कुछ बच्चे डायरेक्टली कर लेते हैं, which I'm doing on the screen. And the other method now is कि अगर 100% पहले cost थी, now it's increased by 7.2%, so it's 107.2% now, right बच्चे? And after the increase, we know the value is what? 13.40. And we need to know the original value. Cross multiply. Original was 100%, 7.2 increase हुई 107.2. And उसकी value is what? 13.40. Got this? So the first question, we just plug in the value and we get the answer of Q. In the next question, we just expand and multiply and then we'll write in the simplified form. In the third question, we just solve for y. It's really simple. In part D, guys, you need to factorize. Remember in my notes, I told you 2 terms factorization, 3 terms factorization, and 4 terms. So this is 2 terms with the first simple concept. And in part E, you just need to make B the subject. In the first part, I'm supposed to show the angle that's represented on the pie chart with number 4. Number 4 की frequency 35 है. And if you see in the question, total frequency is what? 200. तो total math में degrees 360 होती है and total इधर frequency 200 है. सही है. इसी तरह 200 4 वाले की बच्चे frequency 35 है तो total की frequency will be what बच्चे और उसका angle will be what बच्चे x. You get this? देखो total degrees 360, total frequency 200, 4 की frequency 35, 4 का angle x, cross multiply. Then probability of 3 चाहिए. Probability का क्या formula होता है? Favorable outcome upon total outcome. फिर मुझे बोला है that spinner land on a factor of 30. 30 किस टेबल में आता है? इनमें से 1 पे आता है, 2 पे आता है, 3 पे, 5 पे. एंड इनकी सबकी फ्रीक्वेंसी को मैंने ऐड कर दिया. Then बोला spinner spin to 3000 times. Find the probability that it land on an even number. Currently even number पे कितनी बार आ रहा है? 19 and 35 out of 200, right? तो in 3000 time में कितनी बार आएगा? So see 19 plus 35 makes what? 54. So अगर 200 times में 54 times आ रहा है, so 3000 में x आएगा. You could have also done it like this, or you just find it like this and multiply by 3000. ओके जी. सो इन दिस वन हमें पेंटागन का एरिया चाहिए. सो मैंने इसको एक ट्राइंगल एंड एक रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया एंड यू गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड यू गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल.
बट ट्राइंगल की हाइट कैसे आएगी बच्चे? 15 माइनस 9, दैट्स व्हाट, 6। एंड बेस कैसे आएगी बच्चे? पूरा 12 है, इतना पार्ट 4 है, तो ये हो जाएगा 8। गॉट दिस? So for perimeter, I'm going to add 15 plus 4 plus 9 plus 12, but I don't know hypotenuse. So side पे मैंने Pythagorean theorem से hypotenuse निकाला, and that's how I found that. And I'm going to add all of this for perimeter. इसके बाद मुझे वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर चाहिए, जिसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई क्यूब, और वॉल्यूम का मुझे आंसर पता है, एंड देन उससे मुझे इजीली आर मिल जाएगा। ओके, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड जब तक मेंशन नहीं होता ओपन क्यूबॉइड है, हम लोग हमेशा अज्यूम करते हैं इट्स अ क्लोज क्यूबॉइड, एंड फॉर्मूला होता है 2 लेंथ टाइम विड्थ, 2 विड्थ टाइम हाइट प्लस 2 ब्रेथ टाइम लेंथ टाइम हाइट, एंड इससे मेरा आंसर आ जाएगा। अब बोला क्यूब ऑफ एज एक्स हैज द सेम सरफेस एरिया एज क्यूबॉइड, तो आप क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओगे, दैट्स व्हाट बच्चे 6 एस स्क्वायर, एंड इक्वेट कर दोगे बच्चे आंसर ऑफ अ सरफेस एरिया से। So guys, in the first one, I'm supposed to find out the number of students who took 2 minutes and 20 seconds. 2 minutes and 20 seconds is equal to what? How many seconds in total? 140. So guys, how many students took 2 minutes? So it's going to be बच्चे आपका 13 plus 26. That's going to be बच्चे 39. Do you get this? Then मीन ढूंढना है, इट्स अ ग्रुप डेटा। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब एक्स की हमें मिडल वैल्यू पता होनी चाहिए अगर डेटा आपको एक रेंज फॉर्म में होता है, तो 80 एंड 120 की मिडल वैल्यू क्या आएगी? इट्स गोइंग टू बी बच्चे आपकी 100, and here it's going to be 130, and here it's going to be 145, and here it's going to be आपकी 195. Do you get this? So मीन का फॉर्मूला होता है एफ एक्स को मल्टीप्लाई करना डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। कभी कभार टोटल फ्रीक्वेंसी ऊपर क्वेश्चन में दी हुई होती है बच्चे, इफ नॉट गिवन एट दीज ऑल। डू यू गेट दिस?
Hi guys, this is the question of double backward approach. Why do I call it double backward approach? क्योंकि हमें ग्राफ से मिलती क्या है बच्चे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 100 पे इट्स 8, 150 पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30, 200 पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है बच्चे, इट्स 66 एंड 250 पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है guys? It's 112 and then it's 120. So by this I got cumulative frequency. That's single backward. Now in double backward you need to subtract what's 120 minus 112, that's 8. 66 minus 112 क्या हो जाएगा बच्चे आपका? It's going to be बच्चे आपका 46. Then मेरा बच्चा 66 minus 30 is what? आपका 36 and then बच्चे it's going to be बच्चे आपका 30 minus 8, that's going to be 8. तो ये हो गया डबल बैकवर्ड, यू गेट दिस। देन बच्चे मीडियन कैसे ढूंढते हैं? टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आप 50% निकालते हो। सो द टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाज व्हाट बच्चे? 120। 120 का 50% इज 60। अब कुछ बच्चे यहीं 60 पे आंसर छोड़ देते। नो, we need to make a line at 60 and locate it on the x-axis. So answer क्या है? 195. फिर बच्चे बोले 55% of the adult took 125 second and k second to complete the puzzle. So 55 upon 100 into 120 makes what बच्चे? 66 adults. तो 66 adults आंसर आया बच्चे। एंड 125 पे क्या वैल्यू आ रही बच्चे? 125 पे वैल्यू आ रही 18। 18 प्लस 66 करो बच्चे तो क्या हो जाएगा आपका? दैट्स गोइंग टू बी 84। सो 84 पे मेरा बच्चा क्या वैल्यू आ रही है आपकी? 215। डू यू गेट दिस? 125 से लेके के सेकंड तक 55% थे। तो 66 आंसर आया बच्चे 55 अपॉन 100 इंटू 120 का। 125 पे 18 थे, 18 प्लस 66 करा 84 अडल्ट। कौन से नंबर पे? 215। दैट्स इट। सबसे पहले मेरा बच्चा आपको ग्रिड पे लाइन बनानी है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। सो गाइस जब भी कभी एक लीनियर लाइन बनानी होती है, टेक एनी टू वैल्यूज ऑफ योर चॉइस और फाइंड y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव डन। और कुछ बच्चे इसको ऐसे भी करते थे, देख रैंडम वैल्यूज ऑफ देयर चॉइस 0 1 एंड 2। इसके अंदर बेटा x की जगह 0 डालते हैं एंड देन 1 डालते हैं, देन 2 एंड लाइन बना देते हैं। दिस इज वन वे। नेक्स्ट पेज पे नाउ यूज योर ग्राफ टू फाइंड दीज साइमल्टेनियस इक्वेशन। इस तरह के सवाल कैसे करते हैं बच्चे? लाइन बनाने के बाद मेरा बच्चा जहां पे दोनों लाइनें मीट कर रही है बच्चे, वो मेरी साइमल्टेनियस इक्वेशन का आंसर होता है। तो कहाँ पे मीट कर रही है बच्चे? 1 and 3 पे। डू यू गेट दिस?
ओके नाउ नेक्स्ट पेज पे बच्चे 3 इनइक्वालिटीज दी हुई है और हमें रीजन शेड करना है। x इक्वल टू 5 की नेक्स्ट पेज लाइन पे हमें पता है कैसे बनती है लाइन x इक्वल टू 5 की, इट्स लाइक दिस वर्टिकल लाइन और इससे लेस है। देन y इज इक्वल टू x प्लस 2 की लाइन ये हमें बना के दी, इसके भी लेस है मतलब नीचे। एंड देन द थर्ड लाइन इज दिस वन, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, इसके ग्रेटर है। तो जो रीजन शेड हो रहा है दैट्स गोइंग टू बी दिस वन। दो और बातें नेक्स्ट पेज पे हमसे पूछी हुई इस क्वेश्चन के रिलेटेड, जब कितने पॉइंट्स इस रीजन में लाया करते हैं जो बाउंड्री से बाउंड्री के अंदर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, जो गेट दिस बच्चों, तो 7 पॉइंट। देन बच्चे आपको बोला है वो पॉइंट्स बताओ जिसके y कोऑर्डिनेट इज ग्रेटर देन x। सो इफ आई नोटिस इट्स व्हाट बच्चे आपका 4 5 2 3, एक 2 3 है, एक 4 5 है एंड एक क्या है बच्चे आपका 3 4, राइट। दिस इज डन ऑन नेक्स्ट पेज। फर्स्ट पार्ट आपको एक्सेलरेशन ढूंढनी है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट। तो एक पॉइंट दिया 0,0, एक पॉइंट दिया 8,6, ग्रेडियंट ढूंढ लो, एक्सेलरेशन आ जाएगी। फिर बच्चे हमें मोशन ऑफ साइक्लिस्ट बतानी है 8 से 90। स्पीड कांस्टेंट है बच्चे बिकॉज इट्स अ स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन देन कांस्टेंट देन डिसेलरेशन। टोटल डिस्टेंस स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व शेप आता है। तो दिस शेप इज ट्रेपेजियम। अगर मैं एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम ढूंढ लूंगा बच्चे तो मेरा एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है मल्टीप्लाई बाय 3600 डिवाइड बाय 1000। So that's what we're going to do this. Sir, why multiply by 3600 and divide by 1000? See, meter to kilometer divide by 1000 होता है, that's why divide by 1000. And minutes और seconds to hour के लिए आपको क्या करना था, डिवाइड बाय 3600, राइट बच्चे, क्योंकि सेकंड्स डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में हो जाएगा। It's going to be multiply by 3600 divide by 1000. सो अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड में जब होता है नियरेस्ट खाली, तो हम लोग क्या करते हैं 1/2, दैट्स व्हाट 0.5। तो 352 का अपर बाउंड क्या होगा 352.5 एंड लोअर बाउंड क्या होगा 351.5 का दिस। इसके बाद नियरेस्ट 0.1 आर, तो 0.1 डिवाइड बाय 2, क्या आंसर आ रहा है 0.05 एंड 0, दैट 0.05। तो 4.2 का अपर बाउंड क्या होगा 4.25 एंड लोअर बाउंड क्या होगा 4.15। अब आपसे एवरेज स्पीड मांगी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम और उसका अपर बाउंड मांगा। सो गाइस ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड का अपर बाउंड का रूल मैंने आप लोग को क्या बताया था गाइस, इट वाज अपर बाउंड डिवाइड बाय लोअर बाउंड। तो
इस फॉर्मूला में ऊपर टोटल डिस्टेंस आता है, मतलब डिस्टेंस का मैं अपर बाउंड लूंगा, एंड डिनोमिनेटर में टोटल टाइम आता है, मतलब टाइम का मैं लोअर बाउंड लूंगा, एंड दैट्स हाउ आई गॉट दिस। सो गाइस, सबसे पहले आप एक मैट्रिक्स को एक साइड पे ले आओगे एंड 3a को दूसरी साइड पे लेके जाओगे, एंड देन फाइनल आंसर को आप डिवाइड बाय 3 कर दोगे। नेक्स्ट पार्ट में डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है AD माइनस BC, एंड यू गोइंग टू इक्वेट दैट टू 2, सो उससे मुझे P मिल जाएगा। एंड देन इनवर्स क्या होता है बच्चे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट AD की जगह चेंज, BC की साइन चेंज। You can watch my short videos on YouTube also based on matrices. Okay guys, तो जब ऑब्जेक्ट एंड इमेज सेम होता है, कैन क्लियरली सी ए से बी क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन। और जब भी हम लोग ट्रांसलेशन को डिस्क्राइब करते हैं, उसके साथ ट्रांसलेशन फैक्टर लिखना होता है, जो कैसे आता है, इमेज माइनस ऑब्जेक्ट। पहले आप देखो इमेज के ऑब्जेक्ट क्या है, ए ऑन टू बी, मतलब ए इज द ऑब्जेक्ट एंड बी इज द इमेज। सो इमेज का ये वाला पॉइंट लोगे, दैट्स व्हाट, -5 and 5, एंड ऑब्जेक्ट का यही सेम पॉइंट लो, -5 and 5 minus object का same point is what, -1 and 2. So what's my answer? -1 plus 1 is what, -4, and 5 minus 2 is what, 3. Now this matrix is of enlargement with the scale factor -2. जब आपका enlargement का matrix दिया होता है, तो assumption follow होती है बच्चे, that the question का center is what, 0, 0. तो -1 and 2, 0 and 1, 2 and 1, and 2 and 2. Coordinates लिखो, scale factor से multiply कर दो. So it's going to become -4 and 2. It's going to become -2 and 0. It's going to become -2 and -4. And it's going to become -4 and -4. So -4 and -4, 2 and -4, -4 and -2, and 0 and -2. Do you get this? जब भी कभी स्केल फैक्टर नेगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। कैन यू सी दैट? So guys, in the first part I'm supposed to find PQ, so I'm going to use Pythagorean theorem. In the next part मुझे RQS चाहिए. How will I get RQS? मुझे एंगल ऑफ S बताया हुआ है बच्चे, क्या है, 36. सो मुझे उससे PQ की लेंथ मैंने फर्स्ट पार्ट पे ढूंढ ली है, एंड एंगल S मुझे ये वाला बताया हुआ बच्चे 36. बाय दैट आई एम गोइंग टू गेट द साइड QS by using SOHCAHTOA, and once I get that by using cosine rule, RQS एक नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है, मुझे cosine rule के थ्रू इजीली RQS मिल जाएगा, क्योंकि कंडीशन ऑफ कोसाइन रूल क्या होती है, जब हमें तीन साइड्स दी हुई होती है।
So guys, it's a non-right angle triangle. Non-right angle में या साइन रूल अप्लाई होता है या कोसाइन रूल अप्लाई होता है. आपको साइन रूल की भी कंडीशन पता है, आपको कोसाइन रूल की भी कंडीशन पता है. सो मुझे साइड PT चाहिए. दैट मीन्स छोटा Q चाहिए. राइट गाइस? This is छोटा Q, this is छोटा P and this is छोटा T. तो साइन रूल की कंडीशन होती है जब आपको एक एंगल उसके ऑपोजिट साइड पता है, दूसरे का एंगल पता है, साइड मिसिंग है. इन दैट केस आई अप्लाई व्हाट? साइन रूल. दैट्स इट. दो पॉइंट्स बताए हुए, दूसरे के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता बट डिस्टेंस बताया हुआ. Apply the distance formula x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square is equal to under root 20 and then solve it. So guys, in the previous slide, we were given with the gradient over the point of D and that was 4,6. And मुझे DF का gradient 3/2 पता है. और perpendicular का gradient क्या होता है? Negative reciprocal. तो 3/2 का negative reciprocal क्या होगा? -2/3. अब F and D के मैंने दोनों points लिए and that's how I'm going to get the value of F. इन दोनों का gradient ढूंढेंगे NF आ जाए. फिर इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है गाइस? सुनना. ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट क्या है गाइस? एफ. इसके मिडल से लाइन पास होती है. सो आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में पहले डी एंड एफ का मिड पॉइंट ढूंढना है और आपको डी एफ का ग्रेडियंट ऑलरेडी पता है. यूजिंग द मिड पॉइंट एंड द ग्रेडियंट आप इक्वेशन बनाओगे. बाइसेक्टर मिड पॉइंट से पास होता है. अगर आप मिड पॉइंट नहीं ढूंढोगे आंसर नहीं आएगा. Equation बना के will compare to the equation that's given in the question.